it's really about mother. I felt कि मदर टेरेसा अपने आप को ही जैसे डिस्कवर कर रही हैं, वैसा कुछ मुझे फील हुआ। उसके ऊपर से हमें एक डीओपी थी जापान से। मुझे थोड़े से फायरी कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। मेरा तो बचपन से जो है फिल्मों का शौक है ना। मुझे लगता था एक दिन मैं वहाँ होंगी और ये लोग सब जो हंस रहे हैं रो रहे हैं ना एक्टर्स के साथ, तो उस इमोशन से जुड़े हैं, ये मेरे साथ कनेक्ट करेंगे बिकॉज मैं वहाँ इमोट कर रही होंगी और ये सब मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। व्हेन आई वाज 9 तो हमारे शहर में अमृतसर में बलराज साहनी आए। हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है ललन टॉप में। आज सिनेमा अड्डा एक ऐसी फिल्म के डायरेक्टर और क्रू के साथ है। इस सब्जेक्ट पे हमने पहले भी फिल्में देखी है, बट हम और विस्तार से बात करेंगे। मदर टेरेसा और मी 5 मई को भारत में रिलीज़ हो रही है। मेरे साथ है दीप्ति नावल जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू हर। बनीता, संधू, इनको हमने अक्टूबर में पहली बार देखा था। जैकलीन जी और हमारे साथ ऑफकोर्स डायरेक्टर है कमल जी। आपका स्वागत है ललन टॉप में। थैंक यू। तो इस फिल्म से शुरुआत करते हैं। डायरेक्टर जी आपसे स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म को लेके, इस इनक्रेडिबल आइकन को लेकर कितनी फिल्में बन चुकी है, फिर भी आपने सोचा कि आई वांट टू मेक अ फिल्म ऑन दिस। ऐसे आपने क्यों सोचा और आपने अलग डिफरेंट करने की क्या कोशिश की? Yeah, well, it was not obvious to find out exactly the direction of the film, so we had to go through a little bit of guessing while we were shooting. There was a direction which is in the screenplay, of course, but you want to go somewhere where it makes sense with the emotion, but when you shoot a film like this, you're never sure if you're on the right track, so you have to be a little bit feeling a lot, and with the actors as well, they brought a lot of the emotion. I mean, I was telling Deepti that, she always complained like, oh, but what I do, and this is not like a big performance. And I say, but some people, they spend 20 years trying to be just right, and she just come and she's right, and that's really cool, How did you try to do something different with this film? Well, maybe, different, everything has been done to some extent. You make it a little bit different. What is special is that there are 2 narratives going, like a snake, which is trying to go through the emotions. So that's something particular. And there is also an attempt to go a little bit theatrical into the story of Teresa in the past, to be putting a little bit of romance. Romance may not be the right word, but to tune down the reality of what it is to be very poor, So we try to move away from a realism to something that was maybe a little bit aside, but that gives more emotions about it. So. Okay. And you spoke about the actors. So how did it happen? How did you become a part of this film? वो कैसे हुआ? Jacqueline, you should start. What's the most challenging to be playing? I understand it's an honor, but also to essay such a role. Yeah, it's a great honor and it's a privilege, but it's also a very big challenge. But I love challenges. And it was just so fantastic to, to learn Bengali, to learn the Albanian accent in the English language, to really dive into the character, into all these different energies, and to express such a wonderful and strong woman, because I like to play strong women, and I hope to inspire other women as well. And to, I think we live in a world full of conflicts and wars today, and a lot of poverty. So Mother Teresa's idea and vision of living, love in action, actually is very actual as well. Again, we'll come back to that. Very important what you said. I have a question pertaining to that. But आप दोनों मुझे बताइए, ये फिल्म के साथ आप कैसे जुड़े? मैंने audition किया a lot. I did a week workshop with Kamal sir, and luckily after that week I think I impressed him and I got the role. And we worked together a lot on the character development, because she has a very important arc in this movie, one that helps and is driven by Mother Teresa's narrative also. So we did a lot of rehearsals, and then when it came to shooting, I think we found ourselves in a good place. 1 week workshop that she did with you, was there a moment that you were impressed or convinced?
Yeah, I think when she was boxing, I think that was very good to see her coming out of what you explained, of the nice lady into somebody who has a more, more anger and more traction in her. You? Sorry? That convinced you? That's the moment when you said... Well, that's the result of that, what it brought you to and what place you go, and also the capacity to imagine it, the capacity to imagine going there and to feel it. That's where I thought like she could be handling the part very well. For context, the character is at times quite, not aggressive, but she has an inner rebellious, angry quality to her, one which I do not have. So when we were working together, Kamal sir would always say, like, I want more like anger. I want you to imagine yourself as this like queen mother, and there's so much strength inside that you're just exerting out. So he made me do all these very crazy exercises to bring that out, like boxing and jumping up and down. And we would do a scene really, really loud, outrageously loud, and then bring it back in so that he could find that quality, which I hope. Which you can see very soon in the movie. And आपका जो किरदार है is a perfect spoil to that, क्योंकि आप इतने calming हो, नानी का जो character है आपका, but ये film के साथ आप कैसे जुड़े? मुझे याद नहीं है. Kamal, how was I approached for this role? How were you approached? I think it is thanks to our casting director in London. I think. Shakira Dowling. But yes, Shakira. Amazing. Right. Through Shakira suggested probably. Yes. And then I went to meet you and so we neighbors. Met, yeah. He came and met me and we chatted and probably... Yeah, and you read the script, of course, before, so... I must tell you, I was fascinated by the script. क्योंकि जो इसकी जो layers हैं ना, मतलब एक तो मदर टेरेसा की लाइफ के बारे में नहीं है. It's really about mother. I felt कि मदर टेरेसा अपने आप को ही जैसे डिस्कवर कर रही हैं, वैसा कुछ मुझे फील हुआ. You understand? We'll translate. ऐसा मुझे फील हुआ कि वो खुद की रियलाइजेशन जो उनकी हुई, और कविता का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है because it's juxtaposed with Mother Teresa's character, and she's a young girl who comes from where? From London. From London. She comes from London. Yeah. तो वो लंदन से आती है और वो थोड़ी सी confused है लाइफ में. She's going through a turning point और थोड़ा अपने आप से डील कर रही है, and then I'm there as a kind of support system for her. And वो जो 2-3 जो उसकी layers हैं, वो मुझे लगा कि ये it's not a simple film. इसमें complexity है, इसमें layers हैं, और वो उसकी beauty है. और उसके ऊपर से हमें एक DOP थी जापान से, Kiko, and she lives in Bombay. She was amazing. मतलब उनका जो feel है for the cinematic language, I think it's just amazing. And obviously thanks to a director. पीछे director नहीं हो तो DOP भी कुछ नहीं कर सकता है. डायरेक्टर का विजन होता है जिसको और डायरेक्टर का ही विजन है जो हर किरदार को जो है वो अपनी जगह एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देता है. फिर इतने दर्शक हो चुके हैं काम करते हुए, इस जंक्चर पर आप कैसे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हो, या आप कैसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हो? मुझे सब्जेक्ट तो फिल्म का पहले अच्छा लगना चाहिए. सब्जेक्ट अच्छा है, एंड देन उसमें कुछ होना चाहिए जो मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल के उसको दे सकती हूँ. उस किरदार को अपनी एक्सपीरियंस से मैं कुछ ला सकती हूँ. आई कैन ब्रिंग समथिंग टू इट, सो अगर वो वैसा हो. ऑफ कोर्स मुझे थोड़े से फायरी कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसा थोड़ा सा कम मौका होता है. लेकिन ये इसमें बारीकी में खेलने का मौका मिला. बहुत अच्छे से कहा आपने. जैसे कि इन्होंने कहा कि कविता का जो किरदार है बहुत इंटरेस्टिंग है. आपकी चॉइसेस बहुत इंटरेस्टिंग रही है. आई मीन टू मेक अ डेब्यू विद अ फिल्म लाइक अक्टूबर, बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि ऐसे डेब्यू कर रही हो, क्या कर रही हो इस फिल्म में. और इवन फॉर दैट मैटर उद्धम सिंह एंड डाइट सब आल्सो रिसेंटली पुट इट आउट एंड देन ही रिप्लाइड सेइंग कि मैं और फिल्में कर रही हूँ जिसमें मैं ज़्यादा कर रही हूँ. Explain the thought process behind these choices to make a debut with a film like that.
I think I've been very fortunate. Things have come very organically to me. I choose movies that I would want to watch. A film like October, Udam also. And especially when I know I have a strong director behind that project, even if I don't know, like for example, Udam, I didn't know the full script, but I knew Shujit Sir was doing it. So I was like, I know it's gonna be amazing. The same with this with Kamal Sir. I loved his vision, I loved the script, and sometimes you can't say no to things. I was like, I have to do this. So it's quite simple, really. Whatever I want to watch on screen, I choose those roles. but आपको कभी लगा कि अगर आपने कोई और film, great film is wonderful director to work with, but कोई और film choose की होती for a debut, आपका career trajectory अलग होता शायद? मुझे लगता है जी. I think where you start really positions yourself in the industry. I'm so lucky to have started with such a strong director that I've luckily been approached to do work of the same quality. And I think, if I'm being honest, when it comes to the publicity and promotion side of this industry, I'm not the person to ask. I just know how to do my job as an actress, and luckily I get to work with such amazing people. So I definitely would like to stay in this space, but explore different roles. Like I said in the previous interview, I would love to play a villain. Let's see. आपने इस फिल्म को direct किया है, but you're also the writer. But the protagonist is a woman. The story, the struggle is of a woman. So was that ever a challenge? Did you have an advisor? I need to look at this from the female perspective or gaze. Well, the truth is I'm maybe a bit of a woman myself, so that helps me to identify to a lot of emotion. You know, it's not so much. Well, first I can say I was raised with 4 sisters. You know, maybe that helps. But Yes. But also, you know, it's like how you understand women, and also women are easier to express. I mean, to understand because they express themselves. You know, so. For me, I feel every story I have been writing is always with a main character as a woman. I always feel more comfortable to see the world from a woman point of view for some reason. I could not write a story in a pub with 10 guys who just play rugby and drink beer. That wouldn't be my thing. But in the same time, of course, I love to add masculinity into this female character, you know? So it's not just like a woman thing, it's really to have the power. But it also goes, I think I have become a feminist as well. And I have been 18 years now in India, and that brought me even more feminist than before. In our country here, we so much have to defend women and promote women, you know, and with our company we also like to promote women because it's so bad sometimes, you know, the way they are treated. Everyone should be a feminist. It's about equality. Yeah. और But इसमें not everybody does his homework, you know. Yeah, that's fine. इस फिल्म का जो ट्रेलर है, ट्रेलर में there's a line, you know, where she says that she was so disappointed, she was so directionless. She was not able to communicate with her soulmate, but she still continued with her mission. ऐसे लाइफ में भी हुआ होगा कभी आप निराश हताश हुए होंगे and you feel so discouraged. So then how did you keep going? Tell me about an instance in your life when that happened. Jacqueline. Well, I think, you know, this project, this film was really kind of a challenge to be really persistent, and that also helped me to prepare the whole character because as I said, I had this vision to make this film and to inspire the world to live with more compassion. And we established a foundation. The whole film budget is really, you know, collected by donations, and the whole revenue out of the film will support children in education and healthcare. And it has taken us 10 years to find the budget around the world. So I really had to get persistent. I had to get this energy of Mother Teresa to be focused, to really go and to want to make it happen, you know. And that also helped me to really get into the character and find this
strength, The even in tenacity, times the of troubles resilience. and doubts. बट आप दोनों की पर्सनल लाइफ में ऐसा होगा, आपके साथ होगा मैम, इतना लंबा जो आपका सफ़र रहा है, कभी जब आप निराश हो गए बट यू वर लाइक अब कैसे कंटिन्यू करें? कई बार एक बार थोड़ी, आप तो कह रहे हो एक इंस्टेंस, बताओ तो बार बार होता है वो, तो वो जो पड़ाव हैं ज़िंदगी में वो तो आते रहते हैं. इट यू नो एवरी नाउ एंड देन व्हेन एवर यू फेस एंड यू नो in a situation of adversity, you have to step beyond and say, okay, I'm not going to lose focus, I'm going to keep going. ये नहीं हुआ तो next होगा, and you have to believe in yourself. जब मैंने ये सवाल पूछा, आपके दिमाग में या मन में कोई एक ऐसा फ्लैशबैक या इंस्टेंस मैं आया? वही सोच रही हूँ, तो एक तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे एक नहीं है, बहुत सारे हैं. हाँ, वक्त की पाबंदी की वजह से मैंने एक पूछा आपसे, पर ओके. No, I mean it's your own grit, I think, as a person. Yeah. That keeps you going. Yeah. I think it also many times, but I think one main point in my life was when I was diagnosed with depression. That was a place where I really felt rock bottom. It was like a huge pit, and I really didn't see any light at that time, and I was very lucky to have great family and friends around me. But I think what I realized on that journey is no one can help you but yourself, and that process of learning to love yourself and have a strong relationship with yourself and have that inner strength was something so important. And it almost mirrors what Kavita goes through in this movie also, is she's on this journey of, she starts off really not loving herself, and she's making very questionable choices in life. And she goes on this process of dealing with her abandonment issues and dealing with her self-love. And in that way, she's able to love others. And I feel like I have somewhat also gone on that journey over the years. So yeah, I think it always starts with yourself. And then if you can't love yourself, how can you love others? Also, films और सिनेमा के प्रति हम सबका इतना पैशन है, we're so driven and love films. I want to know your first memory that brought you into the cinema world, where you decided, this is my career, this is my path that I want to choose. Was it a film you saw? Was it an instance in your life? बहुत लोग बोलते हैं कि ये फिल्म देख के मैं इस फिल्म की मिमिक्री करता था, नकल उतारता था, फिर मैंने सोचा मुझे हीरो बनना है, जो भी है. आपके लिए वो मोमेंट कौन सा था? Delve into memory and tell me. Well, I started when I was 12, you know. Oh my God, me too. At 11. Child actors. No, and I was acting too. I was doing everything, you know. With the years, I was doing films with friends. How did it happen? How I did don't you know. I decide? don't remember. I just felt it was great to do this. And I remember when I did 3 shots of one person going here, going there, and going there, and you put them together. It's like, it's a story. So I was so amazed. So I just continue like this after I put a bit more shots. And but that's the. Well, I was 5 when I started doing ballet, and I just loved this emotion and this experience to be on stage, doing something. I was a little mouse. I couldn't even see anything through my mask, but I felt that I can express something, that I can really transport and transmit something, and that was kind of the key for my inner life and my inner process also, that I realized I want to be the instrument to express emotions and messages. And that's, yeah, I'm very, very grateful to be in this movie, to have been working with Kamal and the whole team. It's just amazing to be here in India and to experience the world release. So thank you. Universe. Yeah, the universe conspires. At 11. I really enjoyed watching film and TV. I still do, obviously, but I really enjoyed it as a kid. So there wasn't icky film which I was like, I have to be an actress. It was everything I watched. The good, the bad, the ugly. I was like, I want to do this. And luckily my mother took me seriously at 11 and I signed with an agent. And anytime I had a holiday or school break, I was finding work or trying to be a part of whatever short film or BBC thing that I could, and yeah. आप मुझे बताएं, जुनून के पहले शाम बेनेगल जी के साथ कैसे हुआ? मेरा तो बचपन से जो है फिल्मों का शौक
शौक है ना, जब मैं जैसे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, मेरी चाइल्डहुड मेमोir जो मैंने लिखी, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जहाँ मुझे वो सीमेंट होता गया वो इमोशन की मुझे मैं जब बड़ी स्क्रीन पे देखती थी एक्टर्स को इमोट करते हुए, तो मुझे लगता था एक दिन मैं वहाँ होंगी और ये लोग सब जो हंस रहे हैं रो रहे हैं ना एक्टर्स के साथ, तो उस इमोशन से जुड़े हैं, ये मेरे साथ कनेक्ट करेंगे बिकॉज मैं वहाँ इमोट कर रही होंगी और ये सब मेरे साथ कनेक्ट करेंगे. सो इट विल बी एन इमोशनल कनेक्ट विद द ऑडियंस. they'd be sharing my, if I, they'll be laughing with me, they'll be crying with me. Mirror, तो एक तो वो connect मुझे I wanted to matter to the audience, in an emotional way. And you have over decades. Over decades. मेरी मॉम आजकल की फिल्में देखती नहीं है, तो मैं किसी को भी इंटरव्यू करती हूँ और उनको फोटो भेजती हूँ, उनको समझ नहीं आता. आपका फोटो भेजा एंड शी लाइक उनको बताना ना प्लीज, मिस चमको इज माय फेवरेट कैरेक्टर. आई सेड वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है मिस चमको कहती हूँ, बट वो पीस कर पाई, वो इम्पॉर्टेंट है. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमेशा एक वो उत्साह रहता है, जैसे आपने कहा कि मुझे फिल्मों में रहना था, ये किरदार ऐसे अलग अलग किरदार निभाना था. वो इनिशियल थ्रिल और एक्साइटमेंट कभी वेयर ऑफ हो जाती है, कभी लगता है कि काम है, कभी बोझ है? नहीं, वो तो नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं लगता काम है. नहीं, ऐसे हर प्रोजेक्ट एक नया एंथुजियाज्म लेके आता है. व्हेन आई वाज 9 तो हमारे शहर में अमृतसर में बलराज साहनी आए प्ले करने, तो वो प्ले मेरे फादर मुझे लेके गए देखने के लिए. तो मुझे याद है उसका इम्पैक्ट. और उनके पास प्ले तो जैसे होता रहा, बहुत सारी एक थोड़ी ऑडियंस आउटडोर गांधी ग्राउंड में था, स्टेज बना के वो प्ले चल रहा था. वो मैं ज़्यादा सही तरीके से देख नहीं पाई, पीछे कहीं थी मैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले मैं ऑटोग्राफ बुक लेके गई थी, तो मैं आगे जाके व्हेन आई रीच्ड हिम एंड आई सेड कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ. तो उन्होंने जब टर्न अराउंड करके साइन किया, तो उन्होंने कुछ कहा कि आई विल मिस माई ट्रेन माई डियर इफ़ आई कीप साइनिंग ऑटोग्राफ्स. तो मैंने सोचा माई डियर कहा तो मेरे अपने ही हुए ना, तो ये दिस इज़ वेयर आई ऑल्सो बिलोंग. तो इस दुनिया को मैं बिलोंग करूँगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी. तो इस तरह से एक बहुत वो सीमेंट हुआ वो इमोशन मेरे अंदर कि मुझे तो ये करना है. दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस विल बी व्हाट आई वुड डू विद माय लाइफ. And to be able to be successful when you see a dream, it's beautiful. Also इस फिल्म की जो मेन कैरेक्टर, I would say, Mother Teresa, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, in today's times, you think that we have such a loving, compassionate, kindness से भरा icon in the world anywhere? You think there is somebody? उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट भी है खुद के साथ. मदर टेरेसा का खुद का कॉन्फ्लिक्ट, that's what I like about this Mother Teresa film. Because it talks about it, allows her to spell that out. The script gives her those moments where she's spelling out where the conflict is, how it has, how she questions, where she's going. Is this real? Is it there, or is she just imagining this? So human. Great, it's got amazing moments. Yeah. Kamal, But on a personal. and Jacqueline, you very nicely done. I've become a fan of Jacqueline and Kamal both. I saw a behind the scenes video where you're getting the pronunciation of the Bengali words. I saw that. But I mean, like you said, the world today, there's just so much tragedy everywhere, every part of the world. Do you think we have such people, such icons who lead with love and empathy and kindness? Yeah, we have a lot of people, but they may not be that well known, That's the problem. We have a lot of people which are great and do great things, but very often they don't get noticed. But if you open your eyes, you meet them a lot, Also on the sets, आपने इनसे क्या सीखा? उनसे क्या सीखा? कुछ एक चीज़ that is going to stay with you, whichever set you go to in the future, you'll imbibe that into your work. One thing I noticed about Deepti ma'am is that every time before a scene, she was just, and it's something that Amitabh ji also does, where you just run the lines, and it was such a great way to enter the scene. So every time she was in front of the camera, it was the most natural thing I saw, and I felt like anytime I did a scene with her, because she was so great, it almost rubbed off on me, and I was like, oh, I feel like
I'm also at ease now because she's so professional. She does all of the technical work before, and then once she's there, she just has such a calming presence. And I think when you're a young actor, it's, you know, the nerves are there and the anxiety is there. But one thing I learned from her was how well prepared, how punctual she is, and how calming she is on set, and that's very important. A delight for you as a director to have. Sorry? It's such a delight for you to have such. Yeah, no, I mean, I think you know, everyone is very different and everyone has a different approach, a different experience. And what is good in this film is that, I mean, you know, sometimes it's difficult to have two people who have two different dynamic because you have to get the first take in one and the 5 take on the other. So here there was not such problem. I think Deepti, of course, was like flying and offering like something, and I think it helped. It helped a lot. Sorry. It's like a fountain. She just keeps giving. Yeah. Yes. And of course you didn't act with Jacqueline. Jacqueline had to act with other actors, but she also had a role where she was by the role alone, and I had to fight a little bit from this position. So it was different. But I think I was very pleased, very happy with each adventure we had together, or each. You know, working moment. I think there was a feeling of respect and trust. I didn't feel any time there was something that was wrong, and I think we were on the same page. I guess, no. Yeah, I saw that when all of y'all came in. Now I know. Yeah, even when you all came in, the way you all greeted each other, उससे समझ आता है vibe और equation. आपके लिए 2 और सवाल हैं, and then we'll end. आपने हाल ही में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सीरीज में जैसे क्रिमिनल जस्टिस, मेड इन हेवन, और पवन एंड पूजा. थैंक यू. सो ऑल ऑफ दिस रीसेंट वर्क, और हमें लगता रहता है कि हम आपको फिल्मों में नहीं देख रहे, काफ़ी सारी चीज़ों में है हाल ही में ही. आपका ये आजकल का जो काम आ रहा है सिनेमा में, आपका उसके प्रति क्या टेक है? आपको क्या लगता है? इट्स नॉट एज ग्रेट एज जो हम बनाते थे, कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थोड़ा? नहीं, मुझे हर दौर का जो एक चेंजेस आते हैं ना, सिनेमा चेंजेस, जैसे कि पहले राजेश खन्ना रोमांटिक हीरो थे, फिर अमिताभ बच्चन आए, एंग्री यंग मैन, फिर शाहरुख खान का फेज़ दौर आया. तो ये ऑन द लार्ज स्केल ये चलते रहते हैं, है ना, दीज चेंजेस हैपन. तो उस बीच में जो हम फिल्में करते हैं, जो हम चूज़ करते हैं, हमारी जो चॉइसेस होती हैं, उसमें कुछ तो कंसिस्टेंसी होती ही है, बिकॉज इट्स द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. यू विल पिक, यू नो, समथिंग दैट गोज़ डाउन योर हार्ट, है ना. तो वो तो हमेशा रहेगा, और हमेशा वन विल ऑलवेज कीप लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग अप अहेड के हाँ, there will be something that you know I can still try, and I would like to do this kind of thing. वो enthusiasm और वो looking up ahead वो हमेशा रहेगा. Actors तो कभी greedy होते हैं ना, तो वो तो कभी satisfied होते ही नहीं, उनको कभी नहीं लगता है. मुझे तो लगता है I will keep working till the end of my life. I mean, as long as you know I remain healthy. You know, I'll keep working. तो बस वही है कि और ये एक्साइटमेंट रहती कि शायद एक अच्छा एक्साइटिंग रोल जो है वो करने को मिले. और जैसे क्रिमिनल जस्टिस में आपने पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया, उनके साथ काम करके आपको कहीं पे याद आई ऑफ द अदर येस्टरयर एक्टर्स? हाँ, मुझे हरी भाई की याद आई, संजीव कुमार जी की. ऐसी क्या चीज़ थी? पता नहीं क्या था, आई कांट पिन पॉइंट, आई कैन नॉट टेल यू, बट मुझे याद आया कि जब मैं अंगूर में काम कर रही थी संजीव कुमार जी के साथ, वी यूज्ड टू कॉल हिम हरी भाई, तो उनका भी एक मतलब वो उनकी प्रेपरेशन ज़्यादा नज़र नहीं आती थी. ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हुए सीन, वो प्रेपरेशन ना ज़्यादा दिखती नहीं थी, लेकिन जब वो आते थे वो इतना बस वही कैरेक्टर जो बन जाते थे कैमरे के सामने. उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ. मैं जब भी कोई नई फिल्म करती थी उनको बुलाती थी कि आप देखिए. कमला में मैंने उनको बुलाया कि हरी भाई यू कम एंड सी, फिर अनकही में बुलाया, उनके लिए स्क्रीनिंग रखी, बिकॉज आई वांटेड टू गेट. तो उस तरह का पंकज के साथ काम करके इट रिमाइंडेड मी समथिंग. आई डोंट नो व्हाट, इट्स नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर्स, बट कुछ रिमाइंड
मुझे याद आई उनकी। दैट्स ब्यूटीफुल। और आखिरी सवाल ये कि लोग हमेशा बात करते हैं आपके और फारूक जी की जो पार्टनरशिप थी, एंड वी स्पोकन अबाउट, जैसे आपने कहा ना एज एन एक्टर व्हाट यू ब्रिंग, आपकी जो प्रिपरेशन थी जो उन्होंने भी बताया, बट जब यू आर वर्किंग विद समबडी एंड यू हैव दैट कंफर्ट लेवल और पार्टनरशिप, तो और आसान हो जाता है कि हर फिल्म में आप अलग फिर कैसे करते हो? आई गेस एक कंफर्ट लेवल जो है ना विद योर को एक्टर्स, वो क्योंकि फिल्में तो मैंने बहुत सीखी और फारूक के साथ मैंने शायद 7-8 प्रोजेक्ट्स किए, इंक्लूडिंग टीवी में भी कुछ था सईद मिर्ज़ा के लिए, अज़ीज़ मिर्ज़ा के लिए। वो तो एक कंफर्ट जोन जो था हमारा, वो तो बहुत अच्छा था। वी हैड ग्रेट स्क्रीन केमिस्ट्री, यू नो, एंड इन पर्सन वी यूज्ड टू कीप फाइटिंग। मतलब वो अगर लोग सोचें कि ये तो बहुत रोमांटिक पेयर हैं और इनका तो ऑफ स्क्रीन में भी कुछ तो जुड़ना चाहिए, आई हेट टू डिसअपॉइंट एवरीवन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इट वाज जस्ट ग्रेट कॉमरेडरी, यू नो, ऑन द सेट्स एंड ऑफ द सेट ही यूज्ड टू इरिटेट मी अ लॉट। हमेशा मेरी खिंचाई करते रहना और हमेशा मुझे थोड़ा चिढ़ाते रहना, तो इसलिए दोस्ती बहुत थी। मे बी वो फ्रेंड्स ऑफ अपार्ट फ्रॉम ऑन द सेट वी वर, आई मीन आई न्यू हिज होल फैमिली। उसके बच्चे मेरे सामने पैदा हुए एंड आई न्यू हिज वाइफ वेरी वेरी वेल। तो एक हमारा फैमिली रिलेशन था। थैंक यू, आपने इतना वक्त निकाला, सो पेशेंटली यू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द फिल्म। आई लव हाउ यू क्रिएटेड द 1950s के स्लम्स इन कैलकाटा। आई सॉ द मेकिंग ऑफ ऑल ऑफ दैट, सो रियली ब्रिलियंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, बट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जब आप ये फिल्म देखोगे तो सारे प्रोसीड्स बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए जाएगी, तो 5 में अभी से बुक कर लीजिए। शुक्रिया।